Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika, and in our last video we saw how do we convert an infix expression to a postfix expression, and in this video we are going to see how do we evaluate a postfix expression using stacks. So let's get into the video. So this is a postfix expression जो हमने यहाँ पे लिया as an example which we are going to evaluate, and we are going to use stack for it, of course. So let's just discuss the very basic idea. So हमें postfix में we don't have to worry about the precedence or associativity because this postfix expression has already been written taking care of all those things. So हमारा mind में सिर्फ क्या होना चाहिए, as soon as we see any operator. So for example, there is this plus and we have two operands before it, so we are just going to add these two operands. Then we have minus 11 and a multiplication sign, so whatever we get after adding this and minus 11, we are going to multiply that. So that is how it goes. We don't have to think about anything, we just have to do the operations when we see operators, right? So this can very easily be achieved using stack. So let's see how we are going to do this. So suppose this is our stack. So the idea is whenever we see an operand, since abhi we can't do anything about it unless and until we see an operator, we'll have to just remember that we saw this number. So we will store this in a stack to remember it. Next हमने 6 देखा, we'll store it. Next we are seeing 9. Next we are seeing 3. अब यहाँ तक हमने process कर लिया and we have remembered all the numbers that we have seen till now. Now we see a plus sign. That means that now it's time to do some operation. So what I'll do is, सबसे ऊपर जो भी दो numbers हैं मेरे पास, obviously we'll have to do the operation on that. We'll pop these two out in two different values, let's say value 1 and value 2, and whatever operator we are seeing right now, so it's plus at this point of time, we'll just do that operation and push that back again in. So right now we have pulled these two elements out, that is 3 and 9. Now we are going to add this, so it will make 12, and we are going to push that back again in my stack, so 12. So after we have processed till here, हमारा stack कुछ ऐसा दिख रहा है. Next we see minus 11, again it's an operand, so we'll just push it. Again we see a star, a multiplication sign, so again we'll pull these two out in two variables. So this is now minus 11, this is 12, and this is multiplication. We'll multiply these two and the answer will be 132 minus 132. So we'll just pop these two elements out and push minus 132 to my stack. Now next we see a division sign. So what do we do next? We have to obviously divide the top two elements. Now the order matters here. You do not divide the first value by 12. It will be not minus 132 by 6, but it will be 6 divided by minus 32. So whatever goes first will be divided by whatever goes next. So it will be 6 divided by 132 and order matters, guys. अगर आप उल्टा कर दोगे इसका 132 divided by 6 कर दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. So it's 6 divided by 132, which is basically 0. Okay, so now 0 goes into this and we have evaluated up to here, right? Now next is again one operator, which is a star, multiplication sign. So the two values here are 10 and 0. So value 1 is 0, value 2 is 10, and we have to multiply this and remove this from the stack and then put the answer of this into the stack, which is 0. Now we have 17, so we'll put that into the stack. Now we have plus, again we'll pull this out and add 17 plus 0 to the stack, so it will be 17. Next it's 5, so we will put that and then ultimately we'll add that. So 5 plus this is 22, so our final answer is 22. Okay, so this is how you do it. Now if this is a valid postfix expression, then remember that at any point of time you will have something in your stack if you are encountering a star. What I mean to say is, suppose your expression is like 2, 3 and plus and multiplication. So what you are going to do is you're going to put 2 and 3 into the stack, you're going to add it, pull this out of stack and put 5 here, and then you get a multiplication. So what are you going to multiply? There is only one operand, so this is never going to happen if it's a valid postfix expression, right? So
whenever you are going to evaluate an expression, if it's a valid postfix expression, you will always have something in your stack to operate on if you are seeing an operator, right? Now let's just go ahead and code this solution. So we are given the expression in form of vector of strings. So यहाँ पे string का एक vector है जो हमारा postfix expression हमें दे रहा है, and we have to evaluate it. So this is basically 2 1 plus 3 star I mean asterisk multiplication. So हमें बताना है कि यहाँ पे क्या होगा. So as we've already discussed, हम वही code करेंगे. So we obviously need a stack of type integer. Let's name it st. Okay, now we have to, as usual, iterate over this vector. एक एक character हमें लेके उसे evaluate करना है. So I am just using enhanced for loop here. Tokens is the name, so that is what we're going to use, right? So यहाँ पे टोकन्स का एक एक वैल्यू मेरा इंडेक्स 0 से लेके एंड तक एस में आता रहेगा जब तक उसमें है. नाउ सबसे पहला चेक ये है कि एज वी सॉ अगर वो एक ऑपरेंड है तो वी आर गोइंग टू डायरेक्टली पुश दैट इनटू आवर स्टैक. सो वी हाउ वी आर गोइंग टू चेक दैट, वी जस्ट वांट टू चेक इट बाय इफ इज ऑपरेटर. अगर ये कोई एक ऑपरेटर है, इफ इट्स नॉट एन ऑपरेटर, आई मीन if it's not an operator, then we are going to just push it to the stack. Now mind it कि यहाँ पे हमें vector string का दिया हुआ है and ये integer type हमें यहाँ पे input करना है. So we have to convert this string to integer. Now you can write your own function, but C++ में already एक function है s to I, जिसमें हम लोग अगर s pass करें जो कि एक string value होगी तो that will return me an integer for that same. तो हमें ये push करना है. Now this operator function, this is not predefined, we have to write our own operator, is operator function. So सिंपल है बहुत. इज ऑपरेटर जो एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा एस, लेट्स नेम इट. अब हमें रिटर्न क्या करना है. नाउ यहाँ पे ज़्यादा इफ कंडीशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली विल जस्ट राइट एक स्टेटमेंट में रिटर्न एस इज इक्वल टू प्लस और एस इज इक्वल टू माइनस और एस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन और s इज इक्वल टू डिविजन. सो यहाँ पे मैंने और लिखा है, तो अगर इसमें से कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स. तो दिस विल टेल मी दैट इफ माई स्ट्रिंग वॉट एवर आई हैव राइट नाउ, इफ दैट इज ऑपरेंड और नॉट. So if it's an operand, we're directly going to push the integer value of it to our stack. Else we have to see कि हमें इसके संग क्या करना है. So you can write a switch case or you can write if else, whatever you want. So let me write a switch case. So मैं ये इसको character में convert कर लेती हूँ क्योंकि switch में character जाएगा. Okay, so my case पहला अगर वो addition है. Okay, so obviously हम लोग को यहाँ पे क्योंकि एक operation करना है, so we'll want our operands जो कि हमारे stack में है. तो value 1 निकाल लेंगे जो stack में सबसे ऊपर है और st डॉट पॉप और वैल्यू 2 निकाल लेंगे st डॉट टॉप एंड वी विल पॉप दिस. तो केस 1 लिखते हैं जो कि अगर वो प्लस हुआ तो क्या करना है हमें. सो वी आर डायरेक्टली गोइंग टू पुश वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 1 टू आवर स्टैक एंड वी हैव टू ब्रेक इट. सिमिलरली हमें सारे केसेस लिख लेने हैं. नाउ वी हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड इज हमें अगर स्टैक में जो पहले है मतलब वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1 होएगा, ठीक है, नॉट वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2. सो इट विल बी वैल्यू 2 माइनस वैल्यू 1 ब्रेक केस डिवाइड. सो ये जो ऑर्डर है ये हमें डिविजन और सब्सट्रैक्शन के केस में ही याद रखना है. मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये मैटर नहीं करता, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑर्डर while we are dividing and multiplying and subtracting. So we have to push value 2 into value 1, right, and we need to break it. सिंपल. एंड इसके बाद हमें डालना रिटर्न क्या करेंगे हम st डॉट टॉप. ग्रेट, लेट्स जस्ट रन दिस कोड एंड सी. सबमिट इट.
Okay. Okay, so it's correct. Now, one thing I like to point out here is, so in the description, if you'll see, they have said that it is guaranteed that this expression is valid, and the expression would not all will always evaluate to a result, and there will be no division by zero operation. So इसलिए हमने यहाँ पे बाकी कुछ चेक नहीं किया, बट अगर ये वैलिड नहीं भी हो सकता है, अगर ऐसा सिचुएशन है हमारे पास, तो यहाँ पे इन दिस एल्स कंडीशन विल ऑलवेज चेक बिफोर दिस टॉप कॉलिंग दिस टॉप फंक्शन दैट कि मेरा स्टैक एम्प्टी ना हो. क्यों? क्योंकि अगर हम एक एम्प्टी स्टैक पे टॉप ऑपरेशन करेंगे तो माय प्रोग्राम विल फेल, इट विल टर्मिनेट एब्रप्टली, क्योंकि वो हैंडल्ड नहीं होता है स्टैक के अंदर. जो ये C++ का स्टैक लिखा हुआ है, इसमें दे डू नॉट हैंडल द सिचुएशन वेयर यू कॉल द टॉप फंक्शन ऑन एन एम्प्टी स्टैक. You have to check that, but since we know कि हमारा जो एक्सप्रेशन है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, वो हमेशा वैलिड है, तो अगर एक ऑपरेटर आ रहा है स्ट्रिंग में तो मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी ही हमारे स्टैक में. दैट्स व्हाई वी आर नॉट चेकिंग दैट, बट दिस इज अ पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड, राइट? So that's it for this video. I hope you enjoyed it. I hope you liked it, and you were able to understand now. Do try to code this yourself. Do not just leave by seeing the video. फिर बाद में खुद करने बैठोगे तो हो सकता है ना बने. So अभी एक बार ट्राई कर लेना खुद से कोड करके कि समझ में आ गया ना. So stay tuned for more such videos. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye.